Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome, sir. First of all, I would like to know if I'm audible. Yes, sir. Okay, let's wait for others and then we'll continue. Okay, then let's start. So, Assalamu alaikum. You guys can mark your attendance in the chat, and so it will be easier for me to see it later. Okay. Now, flight control systems. First of all, about this lab is you're going to need three softwares for this. First of all, you need LabVIEW. Version is all up to you, and then you need Matlab again, uh, and Explain. See, so basically, flight control systems क्या होते हैं? Like there's this autopilot, that's a flight control system. Flight augmentation systems होते हैं. Say it's not all about autopilots and everything. जो planes हैं आजकल के, ठीक है, there was a time when they were only there were only what you can say um, fly-by rods or manual airplanes that required a lot of power and muscle from your pilot to be able to operate. But nowadays, as you can see, that is not the case, because now we're switching towards fly-by-wire systems, and
जो न्यू एरा है दैट इज फ्लाई बाय लाइट सिस्टम्स. फ्लाई बाय लाइट इज बेसिकली योर ऑप्टिक फाइबर. ठीक है. तो we are cutting down the response time of the system. ठीक है. so उसमें होता क्या है देखो. जस्ट लाइक F-16 से ये जो जेट फाइटर्स होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल एयरक्राफ्ट बिकॉज उन्हें मैन्यूवरेबिलिटी चाहिए. अगर हम उन्हें स्टेबल कर देंगे दे वुड बी लेथार्जिक, they'd be slow, and we won't have much maneuverability there. So we keep them unstable to have that quick response. So उसमें क्या होता है कि अब उस एयरक्राफ्ट को कंप्यूटर के थ्रू, फ्लाइट कंट्रोल्स के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू स्टेबल किया जाता है. ठीक है. there are sensors, there are other stuff that carry that whole aircraft around. Other than that, अब जो हमारे obviously civilian aircrafts हैं उनमें बहुत ज़्यादा safeties की need होती है because you're carrying like 200 to 300 passengers around. So उनमें flight control systems जो हैं they ensure a successful flight, a stable and successful flight. ठीक है. अब इसमें it's not all about as I said it's not all about autopilot. It's about pilot augmentation, systems that help the pilot towards a successful flight. ठीक है. So that all is about your programming and all that stuff. अच्छा now there is किसी का mic खुला है. Okay, I'm not sharing the screen. अच्छा. सो लैब्स आप लोगों को जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा. अम, मैं व्हाट्सएप पे नहीं, LMS पे डाल देते हैं. ठीक है. LMS पे आप लोगों के की लैब्स अवेलेबल होंगी और सॉफ्टवेयर आई एम अफ्रेड आप लोगों को कुछ जो ना वो अरेंज करने पड़ेंगे. अदरवाइज I live in Johor, so bring your USB and hard drives with you, and you can take these softwares from me. So yeah, explain is like about 55 GBs, around 55 to 60 GBs. So you'd need a hard drive for that. ठीक है. So in any case, whatever you need, I'm here to provide. Of course, I cannot upload these softwares myself. Now, LMS पे लैब्स अवेलेबल हैं. अच्छा, लैब का जो भी ब्रेकआउट है, आई एम श्योर यू गाइज डोंट केयर, और it's the same for, of course, every lab. Now, first, let's start with Matlab. Now, there is a problem with Matlab here, and that is I don't have Matlab. So we will look at this in the next lab. For yeah, anyway. Okay, so LabVIEW. LabVIEW जो है as I said कि it's been एक second. Let's just do that.
Okay, are you guys can you guys see this? Yes, sir. Okay, so LabVIEW एक mouse कहाँ गया? अच्छा, LabVIEW has been there for you know Pakistan Air Force and other such forces or Lockheed Martin जो है वो they all kind of use this software for their testing purposes and like recently a couple of students have approached us for their projects. So there are a lot of applications to this software. ठीक है, टेस्ट बेंचेस बनाने के लिए किसी भी टेस्टिंग के लिए ऑपरेटिंग इफ यू वांट टू ऑपरेट a whole industry or anything you'd like or to program this software is so easy to operate. It's just hard to accept this. So first of all, LabVIEW obviously आप डबल क्लिक करके LabVIEW स्टार्ट करेंगे और I really need to get back. Okay, so what you will get is a blank page. Okay, let's just forget about this blank area. This is called the front panel. Okay, uh, what's okay. Acha, I'm not really going to see the chat during the meeting. So if you guys have any question or anything, just feel free to unmute yourself and say it. Okay, right. So this is the front panel. ठीक है और विंडोज पे आएंगे और ब्लॉक डायग्राम पे ये ब्लॉक डायग्राम कहलाती है. दिस इज वेयर द रियल प्रोग्रामिंग इज हैपनिंग. ठीक है, इसको आप कह सकते हैं दिस इज योर GUI, your graphical user interface. ठीक है, this is what a your user or any operator would see when you provide them with your program or anything. This is the main thing, main stuff. इसके बारे में सिर्फ आपको पता है. That's it. ठीक है, because you're the programmer here. Now ये एक बेसिक सा प्रोग्राम जो है वो बनाया है मैंने that converts Fahrenheit to centigrade and or centigrade to Fahrenheit when you need it. ठीक है, अच्छा. Now when you of course you go to new VI. ठीक है, VI is stands for visual interface and when you come here, all you need to do is press your right click. Now right click पे we have numeric columns and यहाँ पे मतलब basically जितने भी graphical user interfaces हैं, so ये graphical representations जितनी भी हैं वो यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, buttons हो गए, numeric हो गया, anything at all. So ये इसमें basically inputs और outputs दोनों हैं. ठीक है, like you can use your buttons as input. You can use these sliders on a knob or a dial. Let's see this. There's a dial. Okay, you can use them as input and you can also use them as output. See, so it's really up to you how you use it. As a dial key, you can change your ranges. Like I'm not gonna disturb this one. So yeah, okay, let's who cares. So 50 कर दिया. So I have a range from 0 to 50 and 100 again back. So just like that, in dial you have this option to change your range. So yeah,
You can also set your maximum or minima, like I'm gonna do here. So अब ये 10 से start होके 20 पे जाएगा. So you really have a quite a free hand here with this software, and I enjoyed very much working with this. So then we have our outputs. We have graphs and other stuff that we can use. Okay. अच्छा ये types हैं इसकी. Then again, and we have Arduino. Arduino को आप directly LabVIEW के साथ program कर सकते हैं, and to operate your real life, your physical systems. See, so from software to your physical world, it's really, an easy task to perform on LabVIEW. Acha, so first of all, let's just see what this program can do. Okay, and then I'll explain it. So हमारे पास यहाँ पे जो slider है, that is the input and this is the output currently. Uh, so I'm going to start. Oh, sorry, I didn't do this. Let's just. अच्छा देखिए यहाँ पे भी दो चीज़ होती हैं. You have this run button और ये continuous run button. ठीक है. Now run button से क्या होगा कि when I make any changes and I press the run button, this will perform a single iteration. Okay. And when I press the run continuously, this will continuously perform iterations just like that. ठीक है. So this right now we are you know converting Fahrenheit to centigrade. So यहाँ पे as you can see that हमारे पास slider values of input भी आ रही हैं and output की भी slider values हमारे पास मौजूद हैं. अच्छा, and we can also go from centigrade to Fahrenheit, and in that case this should start giving your output as you like. ठीक है. So ये दो तरह के iterations हैं हमारे पास यहाँ पे. और let's stop it. Now let's go back and see कि actual coding किस तरह की हुई थी. All right, now this is the block diagram. अच्छा, अब यहाँ की अपनी जो है वो एक working structure say है. Like you press your right click here, तो यहाँ पर as you can see के अलग अलग चीजें अब मौजूद हैं. ठीक है. वहाँ पे inputs and outputs है. वहाँ पे graphical representations थी. The actual coding is right here. ठीक है. Behind the scenes. So first of all आपको हमेशा जो है एक structure use करना होता है. See structure में because you want to start a loop. ठीक है. जब तक आप loop start नहीं करोगे होगा कुछ नहीं. मतलब program, your program would work, but जैसे कि मैंने अभी run continuously किया था, so you cannot run continuously then. That program would only work once. Okay, and that's it. It will stop. So now if you really need need to work it in a loop system, so just like that I've used a while loop. Okay. There are case structures and other stuff as well, which I will explain, or maybe I can explain it now. Case structures as well. So yeah,
केस स्ट्रक्चर्स वुड चेंज जैसे जैसे आपके केसेस चेंज होंगे, ठीक है। यू कैन स्ट्रैप बटन हियर, केस सेलेक्टर आ रहा है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये कि आप डायरेक्ट उस चीज जो भी इनपुट या आउटपुट है, जो भी स्ट्रक्चर है, उस पर राइट क्लिक करोगे, एनीथिंग, सी है, जस्ट राइट क्लिक एंड क्रिएट कंट्रोल। ओके, तो अब ये एक बटन बना दिया इसने। ये बटन हमारे फ्रंट पैनल पे शो हो रहा होगा। अब ये बटन कंट्रोल कर रहा है हमारे ट्रू और फॉल्स को। इफ इट्स ऑफ, इट्स फॉल्स, इफ इट्स ऑन, इट्स ट्रू। सी हाउ सिंपल इज दैट। केस स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? केस स्ट्रक्चर बेसिकली देख रहा होता है कि यार अगर ट्रू है तो क्या चलाना है, और अगर फॉल्स है तो क्या चलाना है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एक जो है वो कोई भी चीज़ ऐड करता हूँ, सही है, सो जब ट्रू होगा तो दो चीज़ें ऐड हो रही होंगी, और जब फॉल्स होगा तो एज यू कैन सी कि ये गायब हो गया, और तब जो है वो लेट्स से सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। So it's just two different cases. Then we have this while loop. So while loop पे ये कहलाता है stop button, से loop condition basically. um, यहाँ पे क्या होता है कि भाई इसे बताना होता है कि यार लूप जो है वो कब तक चलेगा। तो इसलिए हमने इसके साथ जो है ना वो एक बटन स्ट्रैप कर दिया। अगेन राइट क्लिक, क्रिएट कंट्रोल, एंड देयर यू गो, यू हैव योर बटन। ठीक है, तो एक बटन स्ट्रैप कर दिया हमने इसके साथ। टू कंट्रोल दिस, ये बताता है कि यार कितनी आइट्रेशंस चल गई हैं। ठीक है, सो यू कैन रियली स्ट्रैप एन इंडिकेटर विद दिस वन। सो राइट क्लिक, क्रिएट इंडिकेटर, एंड देयर यू गो। इसे देखते हैं फ्रंट पैनल पे, देयर वी हैव इट। सो ये बताता है कि यार कितनी आइट्रेशंस चल चुकी हैं, यानी जैसे हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो यानी 6267 आइट्रेशंस हम चला चुके थे। सो देन वी मूव ऑन, और दिस इज अच्छा, इसमें यार जो लैब व्यू है ना, उसमें आप लोगों को सबसे यूजफुल स्टफ वुड बी दिस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इससे आपको काफ़ी चीज़ों के नाम भी पता लग जाएंगे और उनके फंक्शंस। व्हाट्स रॉन्ग? ओके, यार ये मतलब कोई फीडबैक भी बंदा देता है, समझ में आ रहा है या नहीं? सर आ रहा है समझ में। ओके, सर वैसे लैब व्यू में थोड़ा बहुत काम कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर्स, पिछले में, और तो थोड़ा बहुत आइडिया है। लैब व्यू किस में पढ़ा था? इंस्ट्रूमेंटेशन जो कोर्स था। सर इरफान। ओह अच्छा, ओह, तो ला वहाँ पे लैब व्यू पढ़ाया तुम लोग। बता दो, मैं अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ यार सुबह ही सुबह। अच्छा, सो देखो, बट क्या मेरा जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो इसके साथ अलग है, एंड मेरा वर्किंग करने का तरीका भी अलग है इस पे। So I'm just gonna, yeah, this question mark, this really would help you with your, programs. So this is known as wait. See, milliseconds to wait. So हमने यहाँ पे basically जो है वो 10 milliseconds wait time लगाया हुआ है। इसे आप कह सकते हो कि this is कोडिंग में एक यार वर्ड यूज होता था, नाम निकल गया ध्यान से। सर डिले। हाँ, डिले, राइट, वेरी नाइस, थैंक यू। सो डिले कहलाता है, जैसे 10 मिली सेकेंड्स का डिले आ रहा है बिटवीन योर आइट्रेशंस। ओके, बटन्स, ये केस स्ट्रक्चर्स हमने दो जो है वो डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, एक स्लाइड हमने लगा दी बाहर और आउटपुट्स आ गए। केस स्ट्रक्चर्स दो हैं,
अगर आप ये अच्छा अगेन रेडियो बटन से जो है ना वो चेक हो रहा है। तो रेडियो बटन से आप देख रहे हैं कि भाई आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, और अगर आप बटन 2 इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है। ठीक है। सो लेट्स यहाँ पे तो आ गए हम। ठीक है। अच्छा यार एक सेकेंड। राइट दैट्स fine. So now you have it. अच्छा ना right now थोड़ा सा यार मैटलैब के साथ इश्यू चल रहा था, बट आई थिंक मैटलैब भी तुम लोग यूज कर चुके हो पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर, कर चुके हैं। Yeah, okay. So then you know how to operate your MATLAB as well. Basically, ये जो है ना lab, the first lab was an introduction to your both programs and how to operate them. Um, get to know the whole thing. So we're done with LabVIEW and MATLAB as well. अच्छा, इन लैब सेक्शन में आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, और उसमें बेसिकली आपको जो है वो टास्क दिए हुए हैं टू परफॉर्म। सो परफॉर्म दीज टास्क्स, ओके। और इनके स्क्रीनशॉट्स और मतलब रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स और उसके स्क्रीनशॉट्स, ब्लॉक डायग्राम के स्क्रीनशॉट, वो आप लोगों ने अटैच करने इस लैब के साथ एंड अपलोडेड ऑन LMS। ठीक है। Now if you guys have any questions, feel free to ask. सर ये हमारी जो लैब्स हैं ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ही रहेंगी या हार्डवेयर भी होगा उसमें? एक सेकेंड। यार बेसिकली इसमें हार्डवेयर तो होता है, लेकिन अब चूंकि यूनिवर्सिटी बंद है, सो आई एम नॉट श्योर क्या होगा। सुनने में आ रहा है फरवरी से शायद क्लासेस स्टार्ट हो ऑन कैंपस, एंड इफ दैट हैपेंस देन वी विल हैव हार्डवेयर। बट हार्डवेयर खैर इतना कोई इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस रखता नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एवियोनिक्स इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। दैट्स इट। मतलब मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूँ, वो आते हैं कि भाई हाँ यार avionics is aviation and electronics. No, it's not. It's all softwares, it's all programming, it's all coding. That's it. तो ये तो जो हमारे क्या कहते हैं हार्डवेयर्स भी हैं, वो जस्ट एक लूप है। लेट्स सपोज सेंसर्स हैं जो कि यू विल यूज इन योर सॉफ्टवेयर। we are going to use Arduino to see what these sensors look like in your software, what these sensors need to run through LabVIEW. There's really not much in that. ठीक है, मतलब अगर हम वही चीज Arduino के थ्रू चला रहे हो, Arduino कोडिंग के थ्रू, or you can see C programming के थ्रू, तो it takes really time, it really takes a lot of time. So yeah, but अगर आप वही चीज लैब व्यू पे चला रहे हैं, believe me, that's just one block, one piece of block आप attach करते हैं and that starts working. So ये फर्क है दोनों में, so of course you guys know that already. So now इसीलिए थोड़ा सा हार्डवेयर है हमारे पास, जिसमें हमारे पास 3 टॉप है, वी टॉल है, और आई थिंक यही दो हैं बस फिलहाल। So or 4 of that's in ASD, and maybe in this one too. Let's see what
uh, this semester brings. So basically ये चीजें हैं जो हम हार्डवेयर पे थोड़ा सा इसे देखेंगे. If university starts, if it doesn't, there's no big deal. This whole lab can go software based, and yeah, that's it. Any other questions? Hello. नो सर। Okay. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि लैब्स जो हैं वो जूम पे ही लेनी है या लैब यूट्यूब पे लेनी है. फर्क ये दोनों में कि यूट्यूब इज नॉट साइमल्टेनियस. ठीक है. यूट्यूब में आपके पास जब आप टाइप करेंगे तो वो मेरे पास आंसर 5 सेकंड बाद आएगा, एंड फिर जब उसका आंसर दूंगा तो वो 5 सेकंड बाद आप तक पहुंचेगा. सो दैट मीन्स देयर इज अ 10 सेकंड gap between you and me. And second thing, you cannot speak in YouTube. You can only type. So सर जूम ठीक है। yeah, okay. Zoom works pretty well for me as well. So I think that's it, guys. It's सर थर्ड सॉफ्टवेयर का लिंक भेज दीजिएगा, वो हमने यूज नहीं करा हुआ। मैटलैब और लैबव्यू तो है हमारे पास। yeah, explain the link. As I said, there is no link. It's not uploaded anywhere. Okay. You guys will need to arrange it from somewhere. I have it. सर उस्मान के पास है, यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है ये सॉफ्टवेयर. और मैं अगेन जौहर में रहता हूँ, जिसको करीब पड़ता है भाई अपनी हार्ड ड्राइव्स ले आओ और मुझसे ले लो सॉफ्टवेयर. नो इशू. सर ये वर्जन कौन सा है इसका, किसका? एक्सप्लेन का? या कोई भी. एक्सप्लेन 10 ले लो, 11 ले लो, सब टू यू गाइस. सही है. सर इंटरनेट पे नहीं है ये? नहीं यार, मतलब होता है इंटरनेट पे होता है. ओके. 60-65 GB है. अगर होगा तो देख लो. Otherwise, we again, if you have your hard drives, you can take it from me. ठीक. So, सर यूनिवर्सिटी आ रहे हैं आप? not really. Like Monday or Tuesday, maybe. ओके सर। ठीक है. So with this, we come to an end of our lab. Same. Now, oh yeah, well, that's it. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़. हाफ़िज़।